Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we are going to talk about a topic that affects each and every one of us, cleanliness, right? But not just the kind you do at home with a broom and a mop. We are talking about clean cities, okay? Waste management, and how India is tracking its progress through a nationwide cleanliness competition called Swachh Sarvekshan. Okay, so we are going to talk about Swachh Sarvekshan. Now, students, imagine that uh, every city in India has joined a mega competition. Okay, what if they have joined a mega competition and it is regarding the cleanliness? Okay, क्लेनलीनेस के रिगार्डिंग उन्होंने एक मेगा कंपटीशन ज्वाइन किया है एंड टू सी हु इज द क्लीनेस्ट ऑफ देम ऑल. नाउ दैट साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? तो यही है स्वच्छ सर्वेक्षण सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे है एंड इट स्टार्टेड अंडर द स्वच्छ भारत मिशन. Okay, the very same national campaign that basically aims to make India cleaner, healthier and free from open defecation. तो अब हम स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रीट साफ होना चाहिए. नो, दिस इजंट जस्ट अबाउट स्वीपिंग स्ट्रीट्स. स्वच्छ सर्वेक्षण looks at how well cities manage waste, how well they manage how sanitation, hygiene, and how much citizens are involved in keeping their surroundings clean. ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाती है. नो, सिटीजन्स कितना इन्वॉल्व है. ओके, एंड over 4,500 cities, 4,500 cities took part in the latest edition. ठीक है, लास्ट टाइम कब, जब लास्ट टाइम नहीं मतलब 2016 में जब ये स्टार्ट हुआ था तब ओनली 100 सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था. अब देखो 100 से 4,500, दैट्स अ ह्यूज लीप, राइट? And guess what? The survey didn't just rely on what the municipal officer said. ऐसा नहीं कि म्यूनिसिपल ऑफिसर्स ने जो रिपोर्ट दे दिया और उसी पे सर्वे रिलाई करता है, नहीं. It also included feedback from over 14 crore citizens. That's 140 million city dwellers, 140 million voices. Okay, so survey evaluates cities on 10 different parameters. जैसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? जैसे सेग्रीगेशन हो गया, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, सैनिटेशन, वर्कर वेलफेयर, क्लीन टॉयलेट्स, वेलफेयर ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल, citizen participation. So yes, it's like a national test for city cleanliness. इसमें रैंकिंग्स भी है, प्राइजेस भी है, लर्निंग्स भी है. ओके, कंपटीशन है, ऑफ कोर्स तो रैंकिंग तो होगा ही. ठीक है, अब डिफरेंट पॉपुलेशन साइजेस क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं. सी, दिस ईयर समथिंग वेरी स्पेशल हैपेंड. फॉर अ लॉन्ग टाइम cities like इंदौर, नवी मुंबई एंड सूरत, दे वर ऑलवेज ऑन टॉप. है ना, आपने सुना होगा कि इंदौर, सूरत, नवी मुंबई ये हमेशा क्लीनेस्ट सिटीज में आता है इनका रैंक. ओके, so they were the toppers of cleanliness, but that doesn't mean that doesn't but that also meant newer or smaller cities didn't get their moment in the spotlight. Okay, so to change this, 2024-2025 survey, ये वाला जो लेटेस्ट सर्वे था, they introduced a new feature called the Super Swatch League. Okay, Super Swatch League.
सुपर स्वच्छ लीग। अब इसमें क्या है, दिस लीग इट अलाउड सिटीज टू कॉम्पीट इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन साइजेस. Okay, so now whether your city has 20,000 people or 2 million people, you have a fair chance to shine. So this helped cities like Ahmedabad, Bhopal and Lucknow move up in rankings and proving that even big cities can clean up their act. Okay, next is students, cleanliness is not is for everyone. It's not like that कि सिर्फ कुछ cities के लिए फिर कुछ states के लिए है. So earlier, most top performing clean cities came from western or central India. या तो वो western से आते थे या central India से. But this time there's a good news from all over the country. Okay? अब इस बार सारे कंट्री से गुड न्यूज़ आया है. जैसे अगर ओडिशा का ही एग्जांपल ले, ओडिशा इज एन एग्जांपल. द कैपिटल भुवनेश्वर मूव्ड अप फ्रॉम द 34th to 9th rank. Okay, and that's amazing progress, right? And even smaller towns like Aska and Chikiti made it to the top in the category. Cities like Rourkela, Cuttack, Berhampur, they also improved their scores. So this shows us that cleanliness is not just the job of just a few superstar cities. Every city has the potential to become cleaner. Of course, with right effort, teamwork and leadership. वो तो ज़रूरी है ना. And regarding South Indian cities, so cities from the south are yet to make any big mark in the clean cities show. Just Bangalore being the least inspirational. So while Hyderabad, Tirupati, Mysore, and Vijayawada did decently, cities like Bengaluru didn't perform well in the cleanliness index. So this is a reminder that urban development without proper sanitation is not sustainable. ठीक है. अब देखो स्टूडेंट्स, एक और आइडिया इससे आता है, जैसे कि व्हाट इफ द क्लीनेस्ट सिटीज became mentors to those still struggling. ओके, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, राइट? सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स बीइंग सजेस्टेड. ओके, so just like in school, where the class toppers sometimes they also help weaker students, cities like Indore, Surat, and Pune, they can teach their methods to others. Okay, दूसरों को मेंटर कर सकते हैं, दूसरे सिटीज को मेंटर कर सकते हैं कि कैसे क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करना है, राइट? और साथ ही साथ अगर हम एग्जाम्पल कुछ देखें, तो जैसे कि इंदौर का एग्जाम्पल हम लेते हैं. इंदौर हैज 6 डिफरेंट वेस्ट बिन्स. इंदौर के पास 6 डिफरेंट वेस्ट बिन्स है. ओके, जैसे कौन कौन से हैं? ड्राई, वेट, डोमेस्टिक, हजारस, प्लास्टिक, सैनिटरी एंड ई वेस्ट. मतलब 6 डिफरेंट टाइप के बिन्स हैं. सूरत अर्न्स मनी बाय सेलिंग सीवेज ट्रीटेड वाटर. सीवेज ट्रीटेड वाटर. और पुणे का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, पुणे रन्स वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकर्स. So basically turning informal work into dignified employment. And अगर लखनऊ का बात करें तो लखनऊ created waste wonder park. Agra turned a toxic dump site into a beautiful green park using bioremediation. So that's actually science in action. So these are not just ideas. They are working models of innovation, inclusion and investment. ठीक है? Now students, let's talk about challenges. Okay, gaps. अब बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वेस्ट मैनेजमेंट. स्पेशली अगर हम बात करते हैं कौन से टाइप की वेस्ट की, प्लास्टिक हो गया, ई वेस्ट हो गया. ई वेस्ट जैसे ओल्ड फोन्स, बैटरीज, वायर्स. सो फाइव वी जनरेट 1.5 lakh
tons of solid waste in India every single day. Lakh tons of solid waste in India every single day. Every single, हर रोज इतना जनरेट होता है. So that's actually uh, uh, quite much. बहुत सारा है ये, है ना? So we need to take waste management seriously. हमें वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है. ओके, एंड फॉर दैट urban local bodies urban local bodies are or city municipalities, they must work smarter. ओके, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए. डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब जहाँ पे वेस्ट मैनेज किया जाता है स्मॉल यूनिट्स में, वार्ड बाय वार्ड, सो इट कैन हेल्प. Okay, and this year's theme was reduce, reuse and recycle. Triple R. Reduce, reuse and recycle. What does it mean? You might have learned that in your science class, है ना? Reduce का मतलब what you use. Do you really need 10 plastic pens? Okay, reusing. Reuse things creatively. Turn jar into pen stands. Use old clothes for cleaning. Recycle waste, especially plastic, metal and paper. We need to recycle that. So the triple R theme, it also talks about waste to wealth. This means turning garbage into jobs, energy and businesses. For example, waste to energy plants जो है, they are being built. Compost from kitchen waste is being sold as manure. But to grow this model, students, cities, they need to attract investors and businesses. So every time, students, you throw something in the bin, remember, you are holding a tiny piece of wealth, right? How you can utilize your creativity in reusing or recycling it. All right. So, students, एक फैक्ट भी है. डिड यू नो दैट इंडिया रिसीव्स लेस देन 1.5% of global tourists? So that's very low for a country with so much beauty and heritage. Why? Because many tourists still complain about dirty streets, smelly toilets, and unhygienic conditions. But now, cities like Prayagraj are being recognized for managing large religious events like Mahakumbh Mela with high sanitation standards. So if our cities become clean and pleasant, many tourists will come, na? And that means more jobs, more business and a better image for India. ठीक है? तो ये इंडिया के लिए ग्लोबल लेवल पर भी बहुत अच्छा होगा. All right? Now, students, the question is what you can do. As a student, what you can do. आप क्या कर सकते हो? You can start with your home. Segregate your waste. Say no to single-use plastic. Okay, respect sanitation workers because they are the heroes. They are collecting garbage from individual home. Because students, Swachh Bharat is not just a government program, it's a people's movement. So every person counts, even you. All right, so that is all for today, students. If you like this podcast, share it with your friends and let's spread awareness and cleanliness. Until next time, stay safe, stay aware, and always stay curious. Bye bye.